The other part of the assignment is in next lecture. Okay, so we are going to start our next lecture. Actually, this was the part of previous lecture. So energy consideration plus orifices. So two topics we will cover in this lecture. The first part is the energy consideration, which is the continuation of previous one. But in this case, first thing which we are going to do is the same Bernoulli's theorem, but for a real fluid. What is the difference between ideal fluid and real fluid? कोई बता सकता है? What is the difference between real fluid and ideal fluid? किसी को नहीं पता? आइडियल फ्लूइड का फ्लूइड की विस्कोसिटी जीरो हो, आइडियल फ्लूइड जिसकी कुछ ना कुछ विस्कोसिटी हो वो रियल फ्लूइड. ठीक है. In short, we can say that if the fluid is having some friction, then it must be a real fluid. ठीक है जी. सारी डेरिवेशन सेम है, जस्ट इसमें एक एडिशनल फोर्स. अगर आप फिगर को कंपेयर करें, you will see that there is an additional force, which is this tau. Previous parts अगर आप compare करें, so you will find only this difference. Tau, which is the shear stress. Tau क्या है जी? Shear stress है. तो अगर इसकी shear force हम निकालें तो क्या होगा? Tau is equal to force per unit area, and if we want to find this force, then tau times area is the shear force. And now what is area? Area in this case, as you know that this shear force acts on the boundaries of the fluid element. Okay, so there must be a circumferential area we should include. So if P is the perimeter of this fluid element, capital P, okay, small p is the pressure, whereas capital P is the perimeter. So P is the perimeter at the bottom and P plus dP perimeter at the top. So we can take the average, just like we found the weight component, we just take the average of P perimeter at the bottom plus P plus dP perimeter at the top divided by 2. So this becomes P plus half dP times this distance ds. Okay, so this becomes the perimeter, which is the area, perimeter times length. So P plus half dP is the area over which the shear stress acts, P being the perimeter of the end area A, which may have any shape. ठीक है जी. तो ये एक एडिशनल फोर्स आपकी आ गई है जो आपने कंसीडर करनी है इस केस में, दिस वन. बाकी सारी चीजें वही हैं, प्रेशर फोर्स, वेट फोर्स, एम ए. ठीक है, सो सिर्फ ये एक्स्ट्रा फोर्स है. जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सो यू विल सी दैट एट द लास्ट एनर्जी पर यूनिट वेट, this is an additional term. So this is the head at point 1 and head at point 2, but this is an extra force which is due to friction. Okay, say I have a glass, and if I have a ball of mass m and I roll this ball with force F, it will cover, after some time it will cover this distance. ठीक है जी. And similarly, if I have a rough bed,
rough bed, the same ball M with mass M, the same force is applied on that. Okay, just you can tell me that will the second port in the second part, will the ball will cover more distance or less distance? Less distance. Sir, less. Yes, sir. Less distance. Less. Very ठीक है जी. Less distance है क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन है, यहाँ फ्रिक्शन नहीं है. This is no friction and friction. So this actually the small the difference between these two, the difference between these two, it is basically head loss. And in this part, this is the head loss due to friction, which we consider as a major head loss. In a pipe flow, there are two types of losses. One is we call it as major head loss, and it is due to friction. Similarly, the second are the minor head losses, and these are due to, say, if we have a certain turning in pipe, if we have certain fall in pipe, if we have certain expansion in pipe, if we have certain contraction in pipe, just like this. So these are all minor losses. But during calculation, we must consider these types of losses. In fluid mechanics too, you will study the pipe flow mechanism in detail. So in that part, you will learn about these different types of losses. But at the moment, जो मैंने आपको कहा कि अब point 1 में, say if we have a friction, so there it would cover more distance, ठीक है. लेकिन जब आप फ्रिक्शन के साथ करेंगे तो ये डिस्टेंस से फ्रिक्शन में कम आ रहा है, ठीक है. तो आप क्या कर देंगे, सो दिस इज HL बेसिकली. सो आइदर यू शुड add this HL in part 2 or you should subtract this HL from part 1, just like this one. So we have subtracted this from part 1 so that this becomes equal to part 2. बात समझ आई है? ये नहीं आई है? नहीं आई है सर. नहीं आई है? आवाज क्लियर नहीं है, समझ नहीं क्या कह रहे हैं. एक दफा रिपीट कर दे सर. ओके. देखो मैं बता रहा हूं कि इफ ड्यू टू हेड लॉस the frictional force, I mean the ball which is moving on a rough bed will cover less distance, ठीक है. तो जो भी head loss है आपका, so you can add this head loss in at this part at point 2, or you can subtract this head loss from part 1 to make both these equations equal. देखें ये दोनों बेसिकली हमने कांस्टेंट बनाना है ना, इसको इन दोनों को इक्वल करना है. ये इक्वल कैसे कर सकते हैं? या तो इसमें हेड लॉस 2 में ऐड कर दें या फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दें हेड लॉस, तभी इक्वल होंगे ना. यस सर समझ में आई है सर. तो हेड लॉस आपने जहां से पहले वाला पॉइंट ज्यादा डिस्टेंस मेजर कर रहा है तो उसमें से माइनस कर दें, और दूसरे वाला पॉइंट कम डिस्टेंस मेजर कर रहा है ड्यू टू हेड लॉस तो उसमें आप ऐड कर दें, ठीक है जी. सो फ्रॉम द प्रूफ आल्सो वी जी सर ये ड्यू टू फ्रिक्शन वाला है ना सर, ये हेड लॉस वाला. जी फ्रिक्शन. सो ये एक्चुअली फ्रिक्शन की वजह से टर्म आई है ना, दिस वन. हमने ये शियर स्ट्रेस फ्रिक्शन की फाइंड की है ना यहाँ पे, टॉप. ठीक हो गया जी. ओके सर.
Okay, so if we compare equation 5.2 with the previous equation 5.7, so this is for real fluid and this is for ideal fluid. We see again the only difference is the additional term, which is this one, okay, which represents the loss of energy per unit weight due to fluid friction between point 1 and 2. ठीक हो गया जी, फ्लूइड फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो गया, जो मैंने आपको भी ये सारा कुछ समझाया. So the dimensions of this energy loss term are length only, which agrees with all the other terms in equation 5.2. So this term is known as form of head. अब हेड क्या है जी? वॉल फ्रिक्शन हेड लॉस, क्योंकि हम अभी फ्रिक्शन लॉस को पढ़ रहे हैं, तो ये पूरा जो लॉस है इसको हम रिप्रेजेंट करें HF से, इट इज ड्यू टू फ्रिक्शन. So we can replace this with HF. The friction causing this loss of energy occurs over the boundary or surface of the element of area PL. P perimeter है, ठीक है? P perimeter length L है. When as often occurs, we consider the stream tube to fill the conduit pipe or duct conveying the fluid. PL becomes the inside surface area of the wall and tau becomes the shear stress at the wall. And tau becomes the shear stress at the wall, tau naught. Okay. So usually we denote shear stress at the wall as tau naught. Okay. So there may be shear stress. Actually shear stress को अगर हम प्रोफाइल देखें तो इस तरह बनती है. At the bottom the shear stress is minimum or zero at the center of the pipe, and at the boundaries the shear stress is maximum. Okay. So at any distance away from the center, say y, the shear stress is tau. But at the wall, the shear stress is tau naught, just like radius. At the total radius of the pipe, the shear stress is tau naught. ठीक है, ये just to differentiate tau सर and एक tau बार naught. सर जी, ये टॉ नॉट वाली. अच्छा, देखो मैं कह रहा हूँ कि अगर एक पाइप फ्लो इस तरह है, shear stress की मैं प्रोफाइल बनाऊं shear stress की, तो shear stress की प्रोफाइल कुछ इस तरह बनेगी, K की तरह. Means shear stress is maximum at the wall, and Yes, as we sir. are moving away from the pipe, the shear stress decreases, and it is minimum at the center line. Yes, sir. Okay, so the shear Yes, stress sir. at the wall, or the maximum shear stress which is at the wall, we represent it as tau naught. Okay, Okay, sir. but there would be shear stress within this part as well, within the pipe, say this one. Okay. So this is tau at some distance from the center y, or from the top. Okay, so tau is the general shear stress which may vary from distance to distance. However, tau naught is specifically the shear stress at the wall. Got it? क्योंकि हमने इसमें अभी जो पीछे Yes, sir. PL पड़ा है, ये एक्चुअली पूरे पाइप का हम डायमीटर लेंथ ले रहे हैं ना, so that's why we say that the shear stress at this moment it should be tau naught. Okay, so wall friction है. अब losses जो है मैंने बताया था HL, so these are the HL is the total loss. It is the summation of HF plus HM. HF is the friction loss, HM is the minor loss, and in minor losses we have different types of losses which I have explained you earlier. Okay, so we can also simplify this pi friction head loss equation if we just write P and A in terms of D, in terms of diameter. Okay, so perimeter pipe का क्या होता है pi D, और area क्या होता है pi D square by 4. So P our A is 4 by D. So in this equation P our A, if we just replace P our A with 4 by D,
then the pipe friction head loss equation would become this. So fluid friction loss from any such case, including wall or pipe friction, we commonly refer to as head loss, and it is denoted by HL. ठीक है जी, head loss from any loss. अब ये क्या कह रही है? Fluid friction loss from any such cause, including wall or pipe friction, we commonly head loss, denoted by HL. So wall friction head loss is usually a part of it. So ठीक हो गया जी? Wall friction head loss is usually a part of total head loss, but it may be all of the total head loss in the given conduit. HL, obviously HL मैंने पहले बताया is say summation of HF plus HM. ठीक है? एक्चुअली होता कैसे, अगर एक पाइप में सडन टर्निंग भी आ गई है तो यहाँ पे भी जब ये हिट करेगा तो फ्रिक्शन बहुत प्रोड्यूस होगी और फिर हेड लॉस होगा. ठीक है, लेकिन यूजली पाइप वॉल फ्रिक्शन हेड लॉस इज फार ग्रेटर देन द अदर फ्रिक्शनल लॉसेस. तो हम उसको जो पाइप वॉल फ्रिक्शन है उसको हम से फ्रिक्शन लॉस प्योर कंसीडर कर लेते हैं और बाकी लॉसेस को नाम डिफरेंट दे देते हैं, से हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, टर्निंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, सो क्योंकि सर ये डी ऊपर नहीं होगा सर क्वेश्चन के सर. क्यों? पी ओवर ए है ना ये, सर तो पी ओवर ए को सर पी ओवर ए की वजह से सर 4D आई है ना सर. 4 by D है. सर डी को ऊपर होना चाहिए. It is 4 by D. 4/D है जी, P over A is 4 by D. वहाँ लिखा हुआ है ठीक है actually. सर में 4D लिखा हुआ है. नहीं, 4 अभी by आपने D. हाथ से. नहीं 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 नहीं. ओके सर. अगर आप दोबारा देखो इसको, अब नजर आ रहा है ये. इस 4 by लिखा हुआ है. मेरे ख्याल आपके शायद स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहा. अब नजर आ रहा है सर. अब आ गया. सॉरी सर. So, another problem, but this is for uh, in it is for real flow. Okay. So water flows through a 150 feet long 9-inch in diameter pipe. अब इसमें diameter same है तो area same होगा. A1 is equal to A2. Similarly, Q भी same है. So V1 is equal to V2. Yes, no? Agree करते हैं? सर एक दफा फिर से रिपीट करिए सर. मैंने कहा है कि diameter pipe का same है. यहाँ चेंज नहीं हो रहा 0.1 और 0.2 पे. Q भी सेम है तो V1 and V2 both these velocity will be same. यस सर. चलो शुक्र है समझ आ गई. Water flows through 150 feet long length given है और D भी given है diameter at 3.8 CFS discharge. At entry point 0.1 the pressure is 30 psi and at the exit point which is 15 feet higher then the entry point the pressure is 20 psi. Psi means pounds per square inch. psi ये याद कर लें आगे आप. प्रेशर में बड़ी कॉमन टर्म है ये. इट इज एक्चुअली पाउंड्स LB पर इंच स्क्वायर. दोनों में डिफरेंस एलिवेशन का कितना है? 15 फीट. मींस हियर Z1 इज से 0 and here Z2 is 15. Now and pressure at second point is 20 psi. Pressure भी given है, elevation भी given है, velocity भी given है. अब हमने फाइंड क्या करना है फिर? Find the pipe friction head loss.
HF or HL. The wall shear stress and the friction force. Wall shear stress means tau naught and the frictional force means अगर ये tau naught होगी तो tau naught times A करेंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी. So the first thing we are going to find is this thing. So this is the first thing we are going to find. ठीक है, first part. Pressure भी given है, Z1 भी given है, velocities ये दोनों same है. उस प्रॉब्लम के केस में तो ये हम बेशक कैंसिल कर दें, हम इसको सॉल्व भी ना करें क्योंकि V1 V2 दोनों सेम है. इसको सॉल्व करके हम HF निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? यस सर. ओके, HF में से अब सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं, हमने टॉ नॉट निकालना है. तो हम ये इक्वेशन यूज कर लेते हैं डायरेक्ट. HF है हमारे पास सेकंड पार्ट में, हमने L भी गिवन है, D भी गिवन है, गैमा भी हमें पता है, टॉ नॉट निकाल लेते हैं. सेकंड पार्ट ये है. तीसरा क्या कह रहे हैं, शेयर फोर्स निकालना है. अब टॉ नॉट टाइम्स एरिया अगर हम करें तो फोर्स आ जाएगी. या नहीं आएगी? देखो, टॉ इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया और फोर्स इज इक्वल टू टॉ टाइम्स टॉ नॉट एरिया. अब एरिया इधर क्या है? आ जाएगी. एरिया इसमें कौन सा यूज करेंगे? सर पाइप का एरिया, क्रॉस सेक्शन पाइप का. पाई डी स्क्वायर बाय 4. यस सर. शियर फोर्स कहाँ पे एक्ट करती है? सर पाइप पे एक्ट करती है, पाइप की वॉल्स पे. तो हियर एरिया इज पेरीमीटर टाइम्स लेंथ. देखो शियर फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रही है? पाई डी स्क्वायर बाय 4 जो तो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है. सर पाई डी एल. अगर ये मेरा पाइप है तो ये वाला पोर्शन ये एरिया है बेसिकली पाई डी स्क्वायर बाय 4. अगर मैंने इसका एरिया निकालना है तो आई विल यूज पेरीमीटर टाइम्स लेंथ. ठीक है जी, पाई डी एल. वेरी गुड. जिसने भी बताया पाई डी सर्कमफ्रेंस, दिस इज सर्कमफ्रेंस टाइम्स लेंथ. सो पहले HF फाइंड कर लिया हमने. HF की जो भी वैल्यू आई उसको हमने उससे हमने टॉ नॉट, ये दिस इज टॉ नॉट. ओके, टॉ नॉट फाइंड कर लिया फ्रॉम इक्वेशन 5.15 and from this tau naught we just multiply with the area and we found this frictional force. Any question? If you have any question then you can ask. सर ये अभी आर नॉट, सर ये टॉ नॉट है, आर नॉट है? टॉ नॉट बताया. This is tau naught. It is still have 10 minutes. सर पेरीमीटर इनटू लेंथ, सर एरिया की इक्वल होती है. आप बताओ. मुझे कंफ्यूजन है सर, इसलिए पूछा है सर. बच्चे सर्कमफ्रेंस हमने वॉल का एरिया निकालना है ना. एक सिलेंडर है, सिलेंडर की साइड्स वॉल्स का एरिया निकालना है. तो अगर आपको लेंथ पता हो, इसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है? सर बाउंड्री, सर उसकी बाउंड्री वॉल सारी. ये पाइप है, ये सारा एरिया इसका सर्कमफ्रेंस है 2 पाई r या पाई d. ठीक है, अब इस सर्कमफ्रेंस को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या पाइप, फुल पाइप की बाउंड्रीज का एरिया नहीं आ जाएगा? सर यस सर, से बाउंड्री का एरिया, सर पाइप का एरिया तो नहीं आएगा. तो बात वही है ना, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रही है? वॉल्स के ऊपर ना. तो वॉल के एरिया आएगा.
ओके सर। ठीक है। एक चीज लास्ट थिंग जो कि किसी ने पूछी नहीं कि ये 144 कैसे आया है। 144 क्या चीज है? जी, व्हाट इज 144? कौन बताएगा? यूनिट कन्वर्जन क्या होती है? मींस कि आपने सेम यूनिट यूज करने हैं हर जगह। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सेम सर हर जगह से अगर आप मीटर में करें तो फीट वाइज मीटर में करेंगे कन्वर्ट, और अगर आप फीट यूज करें तो मीटर को फीट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। और विद इन मीटर्स क्या आप कुछ रीडिंग सेंटीमीटर में कुछ रीडिंग मिलीमीटर में यूज कर सकते हैं? सर नहीं, अगर सर मीटर में करें तो सबको मिलीमीटर और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। वेरी गुड। सरल सिमिलरली अगर यूनिट। आप फिट में कर रहे हैं तो क्या कुछ चीजें इंच में और कुछ चीजें फीट में रख सकते हैं? नो सर, पीएसआई को फीट पर सेकंड स्क्वायर में करेंगे कन्वर्ट। पीएसआई को पाउंड्स पर फीट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। ओके सर, पाउंड पर इंच स्क्वायर को सर पाउंड पर फीट स्क्वायर में कन्वर्ट किया ये। जी, पाउंड्स पर इंच स्क्वायर को पाउंड्स पर फीट स्क्वायर में कन्वर्ट किया है। पीएसआई ओके इंच एक इंच में 1/12 फीट होते हैं ना? यस सर। तो 12 क्रॉस 12 कर दिया, इंच स्क्वायर है तो 144 हो गया। नहीं समझ आई? सर आ गई सर। चलो शुक्र है। और किसी को कोई क्वेश्चन? किसी और को कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके। ये भी प्रॉब्लम्स आपके जो है ये असाइनमेंट के साथ हैं। असाइनमेंट टू वर्ड की फॉर्म में मैं अपलोड कर दूंगा, सो यू विल हैव 2 वीक्स टू फॉलो। ओके, इस तीनों पूरी टर्मिनोलॉजी को हम हेड कहते हैं। The first part is the pressure head, elevation head and velocity head. Okay, next प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम कि भाई इसको हम प्रैक्टिकली यूज कैसे कर सकते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, सो बर्नौलीज इक्वेशन can be applied to a great many situations, not just the pipe flow we have been considering up till now. In the following section, we will see some examples of its application to flow measurement from tanks. ठीक है जी, कि एक पाइप के अंदर डिस्चार्ज कितना जा रहा है within the pipes as well as open channel. At the moment, we will find within the pipe. So today we will study its first application, which is Venturi meter. Venturi meter means एक पाइप है, से गैस पाइपलाइन है, ईरान से पाकिस्तान के दरमियान मूव कर रही है। तो आपने उसमें देखना है कि भाई कितने इसमें डिस्चार्ज क्या है। डिस्चार्ज तो वेरी कर सकते हैं ना, इवन एक पाइप के अंदर भी डिस्चार्ज वेरी करेगा। अगर वेलोसिटी कम होगी, इवन प्रेशर कम होगा तो डिस्चार्ज वेरी करेगा। तो आपने उसमें से कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज मेजर करना है सुबह से शाम तक। तो हाउ विल यू मेजर इट? सो दिस इज द वेंचर मीटर, दिस सेक्शन। तो इसमें माइक ऑफ कर दो। Say this is our initial pipe, the dotted line. So we just remove the pipe from this section and we just installed a Venturi meter here. Now Venturi meter has 3 parts. So this is the first part, this is the second part, this is the third part. So the first part
is called the convergent cone. The second part, the throat, and the last one as the divergent cone. A venturimeter is a device for measuring discharge in a pipe. याद रहेगा? A venturimeter is a device for measuring discharge Yes, in a sir. pipe. It consists of three parts: convergent cone, throat, and divergent cone. Okay. So just like in manometers, what you did, you measured the pressure difference between the two pipes even. ठीक है जी? तो आपने उसको मर्करी से कनेक्ट किया होता है. So इसी तरह इसी में भी जो है वो एक safe, sorry. Say we have this pipe, say this one. ये एक पाइप, ये इसका थ्रोट है, ठीक है, और इधर से इसे हमने एक वो फिक्स कर दिया, मैनोमीटर टाइप, उसमें मर्करी है Hg, और ये अब कोई बेरिंग डिवाइस है. ये एक पाइपलाइन है, से फिजिकली पाइपलाइन, और उसमें ये पाइप हमने सेक्शन कट करके इसमें वेंचुरीमीटर फिक्स कर दिया. सो यू कैन सी इजीली सी दिस इज डाइवर्जेंट कोन, दिस इज थ्रोट, एंड दिस इज कन्वर्जेंट कोन. ठीक है जी. और ये नॉर्मल पाइप का डायमीटर आ गया, इस शेप में होगा ये. ठीक है. सो कभी देखे इस तरह का पाइप कभी आपके अपने इर्द गिर्द? इस तरह का पोर्शन यूजली जाली के अंदर होता है, बाहर इसके जो है ना केज बना होता है, कोई चोरी ना कर ले डब्बा वगैरह. कभी देखे इस तरह का? नो सर. नो सर. ओके. कभी आप अपने इर्द गिर्द देखिएगा जहाँ गैस पाइपलाइन का कनेक्शन जो मेन है, तो वहां कोई अक्सर मेन जगह पे वो एक जाली से चैम्बर सा बना होता है, उसके अंदर पाइप होता है, तो वहां पे ये यूजुअली फिक्स हुआ होता है. एंड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द डिस्चार्ज, केज में रखने का मकसद ये होता है कोई इसको डैमेज ना कर दे. ओके. So the first part is a convergent cone, which states that is a short pipe which converges from diameter D1. D1 kg diameter of a pipe in which ventimeter is fitted. Original diameter of the pipe. To smaller diameter D2. अब D2 क्या है? D2 थ्रोट का डायमीटर है. ये थ्रोट है, इसका डायमीटर D2 है. The convergent cone is also known as inlet of the ventimeter. The slope of the converging sides. अब जो कन्वर्ट्स कर रहा है साइड्स से, ये मेन पाइप है D1 डायमीटर का. अब ये कन्वर्ट्स कर तो इसकी स्लोप 1/4 और 1/5 है. उसके बाद क्या सेक्शन आ गया 2, विच इज थ्रोट. ठीक है. थ्रोट में जो मिनिमम डायमीटर कन्वर्ट्स हो गया वो कुछ डिस्टेंस तक मेंटेन रहता है. It is a small portion of the circular pipe in which the diameter D2 is kept constant. So here the diameter is D2. So D1 is the original pipe diameter and D2 is the minimum diameter in the venturimeter, which is particularly at the throat. यहाँ तक समझ आ गया? यस सर. थर्ड पार्ट इज डाइवर्जेंट कोन. ठीक है. अब डाइवर्जेंट कोन क्या है कि वापस आपने पाइप को डाइवर्ट करना है ओरिजिनल पाइप डायमीटर के लिए. इट इज अ पाइप व्हिच डाइवर्जेस फ्रॉम अ डायमीटर D2 to a larger diameter D1. The divergent cone is also known as outlet of the venturimeter. Convergent cone inlet है, divergent cone outlet है. The length of the divergent cone is about 3 to 4 times that of a convergent cone. इससे क्या मुराद है? अगर इसकी लेंथ L1 है तो डाइवर्जेंट कोन की लेंथ 4 है. 3L to 4L है. ठीक है. अब इसकी क्या रीजन है, कोई बता सकता है? फ्लूइड को स्ट्रीमलाइन फ्लो देने के लिए.
चलो इसको पढ़ लो फिर मे भी कुछ आइडिया हो जाए. How it operates. पाइप काट के वेंसीमीटर फिक्स कर दिया, उसके बाद क्या हो रहा है जी? इट कंसिस्ट ऑफ अ रैपिडली कन्वर्जिंग सेक्शन व्हिच इंक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो एंड हेंस रिड्यूसेस द प्रेशर. Means there you will see an acceleration between section 1 and 2. At section 1 and 2, as the area is reducing against the constant discharge, definitely the velocity will increase. Yes, no? जब velocity बढ़ेगी, so according to Bernoulli's law आपने पढ़ा है में भी, P plus half rho V square is constant. ठीक है? Means pressure and velocity are inversely proportional to each other. If pressure increases, velocity decreases to keep the algebraic sum constant. ठीक है? This Bernoulli's law. जब इधर velocity बढ़ जाएगी इस portion में velocity बढ़ गई है, तो pressure कम हो जाएगा. ठीक है जी? यस सर. ओके. अब क्या हो रहा है जब अब सेकंड पार्ट पढ़े. It then returns to original dimension of the pipe by gently diverging diffuser section. Deceleration between section 2 and 3 means between section 2 and 3 the velocity will reduce as the area of the pipe is gradually increasing. So due to this decreasing velocity, the pressure will increase. The pressure will increase. So by when the pressure difference, the discharge can be calculated. अब इसके लिए क्या फार्मूला है वो हम बाद में अभी derive करते हैं कि कैसे find करना है. So this is particularly accurate method of flow measurement as energy losses are very small. Okay, why the divergent cone is made longer? As a result of retardation between section 2 and 3, the velocity decrease and pressure increase. ये इस पोर्शन की बात हो रही है. If pressure is rapidly recovered, then there is every possibility for a stream of a liquid to break away from the walls of the meter. ठीक है? Means पाइप burst होने के चांस है, क्योंकि प्रेशर एकदम से आप इंक्रीज नहीं करेंगे, आप आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं. In order to avoid the tendency of breaking away the stream of the liquid, the divergent cone is made sufficiently longer. Another reason is to minimize frictional losses. So these are the two reasons due to which the divergent cone is made sufficiently longer. So the divergent cone is 3 to 4 times longer than convergent cone. Hope you have got the answer. यस सर. अब आ रहे जी मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज कि डिस्चार्ज कैसे फाइंड करना है. कंसीडर वेंसीमीटर थ्रू व्हिच सम लिक्विड इज फ्लोइंग. सेक्शन 1 एंड 2 आपके मेरे ख्याल समझ आ गए कौन सा है. 2 थ्रोट में, 1 कन्वर्जेंट कौन से जस्ट पहले है ओरिजिनल डायमीटर पर. P1 pressure at section 1, V1 velocity and datum, and similarly A1 is the area of centimeter at section 1. Similarly P2, V2, Z2 and A2 are the corresponding values at section 2. Simple. Applying Bernoulli's equation at section 1 and 2. जो हमने पहले जिसका प्रॉब्लम किया था उसी तरह आपने सेक्शन 1 पे और 2 पे जो है वो Bernoulli's थ्योरम अप्लाई कर दिया. सर आवाज नहीं आ रही आपकी. Just wait a minute. Applying Bernoulli's equation at section 1 and 2, ये तो आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते. कर सकते हैं सर. Okay, as you know that the datum line is same. This is datum line DL.
Yes, sir. But section 1 and 2 both are same, so Z1 and Z2 we can cancel or we can take it equal to 0. Yes, sir. ठीक है, अब ये इक्वेशन ये रिड्यूस होगी, फाइनली आप इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले आएं, यहां तक समझ आ गई, यहां तक समझ आ गई। Yes, sir. क्वांटिटी इक्वेशन क्या कहती है? Q is equal to A1 V1 is equal to A2 V2, यही है। Yes, sir. तो V1 को इस तरह लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। ठीक है, मीन्स कि हमने इस पूरे पार्ट को किसी एक वेलोसिटी में ले आए, आइदर इन V1 और आइदर इन V2। ठीक है, यहां तक करके आगे मजीद सॉल्व किया, सो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है जी, सो वी नो दैट P1 ओवर gamma minus P2 over gamma is the difference between pressure heads at section 1 and 2. ठीक है, so we know that P1 over gamma and P2 over gamma is the difference between the pressure heads at section 1 and 2. When the pipes are horizontal, this difference represents the venturi head and is noted by H. अगर तो पाइप हॉरिजॉन्टल है मींस Z1 is equal to Z2 है, तो ये पूरा पार्ट हम इसको क्या कह देंगे? इट इज इक्वल टू वेंचुरी हेड, टोटल हेड। अगर तो इस Z1 और Z2 0 नहीं है मींस पाइप इंक्लाइंड है, तो देयर इज Z1 एंड Z2, सो P1 gamma plus Z1 minus P2 over gamma plus Z2, then it would be equal to H, वेंचुरी हेड। इस केस में क्या है? Z1 Z2 0 है, सो P1 और gamma माइनस P2 और gamma ही आपका H है। ठीक है, V2 की इक्वेशन यहां तक आ गई। The actual discharge is always less than the theoretical discharge due to certain losses. ठीक है, so therefore we'll multiply the theoretical velocity with some coefficient CD, and the value of coefficient must always be less than 1. Okay, so the venturi head H in above equation is taken in terms of liquid head, but किया था, अगर आपको याद होगा मैनोमीटर्स में, कि हमने अगर पाइप फ्लो डिफरेंट था, पाइप के अंदर फ्लो डिफरेंट है और वेंचुरी मीटर के अंदर मर्करी है, तो हमने दोनों को ट्रांसफॉर्म किया था। So similarly we will transform head in terms of fluid element as we are measuring the head in terms of mercury, तो हमने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया fluid element में। Okay, so this H is basically P1 over gamma minus P2 over gamma। अब ये केस 1 और केस 2 क्या कह रहे हैं जी? अगर तो से स्पेसिफिक ग्रेविटी एसेंस, अगर पाइप के अंदर जो फ्लो है वो डिफरेंट है, आई मीन विच इज डिफरेंशियल, पाइप के अंदर जो फ्लूइड है वो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मैनोमीटर मर्करी से कम है, तो फिर पहला फार्मूला यूज होगा। अगर पाइप के अंदर कोई फ्लूइड अगर मूव कर रहा है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मर्करी से ज्यादा है, तो फिर सेकंड फार्मूला यूज होगा। ठीक है जी, Similarly, if we have an inclined venturi meter in which we have Z1 and Z2, जो मैंने पहले बात की थी, H अब क्या हो गया? H ये है, इसमें Z भी इंक्लूड होगा। ठीक है, X क्या है? X मैनोमीटर की रीडिंग है। X is the difference of heavier liquid in a U tube, मैनोमीटर के अंदर। ओके, सो पहला प्रॉब्लम करते हैं इसका, ताकि आपको समझ आ जाए।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और बेटा सो आप लगा लें लग। So the first problem says that a venturimeter with a 150 millimeter diameter at the inlet and 100 millimeter diameter at the throat. So two diameters are given, which is D1 and D2, and the other thing is that its axis is horizontal, means Z1 and Z2 are same, or they both will be equal to 0. Specific gravity of a fluid flowing in a pipe is also given to us. The oil mercury differential manometer shows a gauge difference of 200 millimeter. This is an X. Okay. Gauge difference means the difference between the two limbs of mercury manometer. Assume coefficient of meter is 0.98. So can you solve this? Calculate the discharge in liters per minute. Can you solve this? Don't. Yes, sir. So the main formula for finding discharge is this Q. So this is the main formula. D1 and D2 are given to you. So from this you can find A1 and A2. The only thing, CD is also given, the only thing H. अब H का क्या formula है? You can use this formula for H. X given है, specific gravity of a liquid is given to you, and specific gravity, or you can use this formula. ठीक है जी, head of mercury is X, 13.6 minus the specific gravity of a fluid. So H क्या आ जाएगा? First problem में 0.2 times 13.6 minus 0.9 divided by 0.9. So H would be equal to 2.82 meters of oil. Okay. So just put all the values in Q, and the answer of Q would be 63.9 times 10 to the power minus 3 meter cube per second. So you need to transform into liters per minute. So when you multiply this with 1000, multiply with 1000, and for converting into minute, multiply with the 60 also. So it becomes 3834 liters per minute. Okay, so this is how we can solve this problem of Venturi meter. So I think time is about to finish.
So Yes, we'll sir. solve some of the problems next week, although I wanted to finish up till problem 5, but some problems I will solve it, and the rest of the problems you need to solve it by yourself. Okay, I will just give you the hint how to solve it. Okay, sir. Okay, so Yes, sir. let's conclude our today's lecture.